Dusty roads, narrow paths, and the joyful sounds of children playing in the streets greeted us as we entered this Sehariya tribal village in Guna district of Madhya Pradesh. This is a community that is deprived of land rights, water connection, and even a functioning school. Our reporter posed the residents the question: what do you expect from the new government taking charge in a few weeks? He expected them to ask for the basic amenities they so desperately needed, but their response was simple yet deeply profound. Bas jeene de, which translates to just let us live. This reflects the deep disappointment of the Sehariya tribe with successive governments and their empty promises to better the tribe's situation. The community we visited is in Bisonia village that falls in the Bamori Assembly constituency of Madhya Pradesh's Guna district. In many Sehariya dominated villages in Bamori, you'll find the same distressing scenes. Old huts without water or electricity, hungry children, sick elderly, poor sanitation, run-down government schools with empty classrooms, and farms that yield less each year. Unlike the strong Bhil and Gond tribes in MP, the Sehariya Adivasis are often overlooked in political discussions during elections and after. The Sahariyas are officially labeled as a particularly vulnerable tribal group. Their population is just over 6 lakh. They live in clusters in the Gwalior Chambal region of Madhya Pradesh with some smaller communities in the nearby areas of Rajasthan and Uttar Pradesh. The Sehariya people suffer greatly from severe hunger, extreme poverty, and social discrimination by dominant caste groups. Despite being recognized as a vulnerable group, it appears that successive governments, regardless of their political affiliation, have neglected the responsibility to take necessary actions to improve the dire circumstances of the Sahariyas. In the noise of the election season in Madhya Pradesh, there's a radio silence from the ruling BJP and the opposition Congress when it comes to the Sehariya community. बमोरी विधानसभा के किसी भी गांव में आप चले जाइए, यहाँ सहरिया समाज जो है इतनी पिछड़ी समाज है, इनको सरकार की योजना जो जितनी भी चल रही है उस सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। गांव में कोई रोज़गार नहीं है, रोज़गार की तलाश में अलग अलग राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, अलग अलग राज्यों में जाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। और जो वन अधिकार अधिनियम एक कानून बना है। दूसरी समस्या ये भी है कि भूदान भूमि के लोगों के पास पट्टे तो हैं लेकिन मौके पर ज़मीन नहीं है, वे ज़मीनन पर दमंग लोगों का कब्जा है और रोज़गार के कोई साधन नहीं है। आप देख रहे हैं इस गांव में पानी भी नहीं है। इस तरह की कई जगह बमोरी के गांव में पीने के लिए पानी भी नहीं है। सरकार ने नल जल योजना तो चला दी, पाइपलाइन गड़ रही है लेकिन उनमें एक बूंदा पानी नहीं आ रहा। तो पानी की भी काफ़ी समस्या है। रोज़गार की तो बिल्कुल सबसे बुरी हालत है। और सरकार की जितनी भी योजना, सरकार ने एक लाडली बहना चलाई है लेकिन सहरिया समाज को लाडली बहना ही नहीं मानी। जो पोषण आहार का पैसा मिलता था जो सहरिया समाज की महिला को, वो और बंद कर दिया है। जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन पिछले 3-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही। All this despite the fact that the current MLA of Bamori, Mahendra Singh Sisodia, is part of the BJP government and also holds the Panchayat portfolio under Chief Minister Shivraj Singh Chauhan. Sisodia also previously served as a minister in the Congress government overseeing labour. His predecessor, Kanayalal Agarwal, who represented Bamori from 2008 to 2013, was also a powerful minister in a previous BJP administration. However, both Sisodia and Agarwal did not address the concerns of the Sehariya community. They rarely visited Sehariya villages, and when the community members raised their issues, they were dismissed and humiliated. The Sahariyas have certain rights protected by the constitution such as the Forest Rights Act and the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act. Land ownership is one of the critical rights and it remains unfulfilled despite promises. पट्टे हम वन विभाग की ज़मीन करके खा रहे हैं। पट्टे दे दें तो भी हमारे बच्चे बच्चियों का सुधार हो। और जो हमारी ज़मीन पुरानी बाप बुढ़े की दब रही है, दमंग लोगों ने छीन रखी है, अगर बा भी दे दें तो भी हमारा सुधार हो सकता है नहीं। हम तो पलांग पे जा रहे हैं तो सर जा रहे हैं सर, क्या करें।
Sisodia is now seeking re-election from Bamori on a BJP ticket, and he denies these allegations. He claims that he has worked for the upliftment of the Sehariya tribe by initiating various projects, including irrigation. Sisodia's opponent in this election is Rishi Agarwal, son of Kanayalal Agarwal, the former BJP MLA from Bamori. Just like Sisodia, Rishi also says his father did a lot for the Sagariyas, but he cannot point to any finished projects or real benefits for this vulnerable tribe. यहाँ सरकार कहती है कि शहरियाओं के लिए, गाँव के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं, आम गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं, मुफ्त में राशन बट रहा है और मुफ्त में बिजली दी जा रही है, कई फसल की बीमा की व्यवस्था सरकार ने करी है। इस तरह की नहीं सर, के वादे बहुत हैं, लेकिन कुछ हो रहा है तो हैं, लेकिन शहरियन तक कुछ नहीं है। शहरियन तक कुछ नहीं है। आप भी देख रहे हैं, हमारी समाज के लिए, हमारी बस्ती देख रहे हैं। अगर इतनी हमारे पास योजना आ जाती तो आज के दिन हम भी ऐसे नहीं रहते, हमारे बच्चे बच्ची भी ऐसे नहीं। Given this political saga, it is no wonder that the people here care nothing about who is contesting in their constituency. All they want is the basic right to live. What the federal saw was, in this Sehariya village, life is fragile, injustice is prevalent, and an uncertain future looms. Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.